This is a very important match of the Pool D, even though if we look for these two teams, they have gone for 2 matches so far respectively, and they have to go for the losses. And today, both the teams will definitely give a very wonderful fight, just have a victory and have something to celebrate till the end of the very pool. We've got the match officials, and we've got the captains with us, and we've got the guest with us, Mr. Akib Saab, who is the editor in a news. He has got the coin in his hands. Let's see whose call it's gonna be. It's gonna be the call of Mr. Asif, captain of Secretariat Titans. Head is the call. It's tail. समीर, पहले तो मुबारक, आपने टॉस जीता, क्या करेंगे आप? पहले हम बैटिंग ही करेंगे। बैटिंग करने की वजह यहाँ पर? हम यहाँ पे पहले 151, 40, 150 के ऊपर रखे। आज बॉलिंग जो है हमारी वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह हम। अगर बात करेंगे आपकी टीम कंपोजिशन की, आज कोई चेंजेस आपकी टीम में? जी सर, उमर आया है फर्स्ट बॉलर एक, और 1-2 स्पिनर भी हमने ऐड किए हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो अच्छी चल रहे हैं, तो इसलिए इसकी वजह से हम 150, 160 तक जाएंगे तो अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो दोनों मैचेस आपने हारे हैं, चाहेंगे कि कम से कम एक विक्ट्री आपको मिले? जी बिल्कुल, आज हम पूरी मेहनत करेंगे जीतने की, तो उसके बाद देखेंगे क्या। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। आसिफ साहब, क्या कहेंगे? चलो, we would have also liked to bat first, but nevertheless, let's hope for the best. Any changes in your team? Yes, we have 2 changes. We have Shaukat and Tahir back. Tahir was a little injured. He has come back in the team. And talking about Ehsan Danish, he is always a gem of a batsman. Today, definitely would love to get some more runs for him. We would definitely love him to make 100 today. I have seen so many 100s coming here in this ground. I would love if Danish makes 100 today. And you would love to finish the poll with a victory? Inshallah. Congratulations for this very important match for you. So the news from the centre. Chairman DDC Srinagar captain Mr. Samir Vani has won the toss and has decided to bat first in this all-important match number 20. We'll be shortly back with the live action of this very important match. Till then, you just give us a break. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all the friends, all the viewers and all the cricket lovers out here in the world. Live on the platform of ANN News channel. This is J&K Qualifiers League. And this is the match number 20. It's a Pool D match. Chairman DDC Srinagar Cricket Club up against Secretariat Titans. A toss won by the captain of Chairman DDC Srinagar Cricket Club, Mr. Samir Vani. And he was having no hesitation, straight away got to bat first. Both the teams have not registered a victory so far in the 2 matches each. And they lost both the matches respectively, and they will try to finish with a victory. Here's the first ball. Round the stumps. Hard first ball, it goes bang.
And the ball, I believe, has just carried all the way. Yes, this is the 6 on the very first ball. What a start this is. That is a dream start. Absolutely, that was pitching over. And all he need to do is just go bang. Naveed just coming into the line and making sure he just connects it well and sends it to the distance. I am your host, English commentator Baba Nisar. I am being joined by my voice, another voice. That is Mr. Saklan Mushtaq. Next ball. Wraps him on the pan. No. The ball had just gone on the plate. Straight out of the point region. That's a great shot once again. 6 followed by a boundary. And intentions are looking clear, Saklan. This is a good start. And this is very great, I believe, the counter attack, especially from the ball one. बिल्कुल स्टार्ट काफी अच्छा मिला है। अगर हम नवीद की बात करें, इनकी भी कोशिश है, अगर ज्यादा रन आएंगे पावर प्ले में तो उनकी टीम के लिए मुफीद वो काम करेगा, काफी अच्छा काम करेगा इनकी टीम के लिए। और आप देख सकते हैं नवीद के इंटेंशंस की अगर हम बात करें वो काफी कमाल के हैं। Next ball, very forward, very defensive, and this is not for the runs or a start. That is a dream start. 6 on the first ball, a boundary on the second, and a dot on the third. 2 slips in place, a gully, a backward point, a cover and a mid-off. A very big gap between the cover and point. In goes Naveed. Adil straight to the point, and not for the runs this time. And just talking about the two teams, they lost 2 matches respectively, and they will definitely go and try to register a victory, somehow give something to celebrate all about. कोशिश रहनी चाहिए दोनों टीमों की। अगर हम बात करें, कोई मुकाबला अभी तक जीते नहीं है, बट इनकी कोशिश रहनी चाहिए कि एक मुकाबला जीता जाए। और इस क्या शॉट है ये, लाजवाब शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए और इंटेंशन जाहिर करते हुए नवीद। Well, intent was clear and he just hits the target. In your replay, you just watch it beautifully. He was having an ample opportunity outside tops to width offer, and he gonna cash it. What a shot! That has gone to the fence in a hurry for 4. 14 for none. Chairman DDC Srinagar Cricket Club winning the toss and batting first. Last ball, Adil Hussain. This one again, straight over the head of the cover, and has gone dancing away. It's gone for 4. Third boundary of the hour, and it's 18 for none. That is a dream start to the likes of Chairman Saklan. शुरुआत कमाल, लाजवाब शुरुआत हुई है। अगर हम यहाँ से बात करें चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की, और 18 बगैर किसी नुकसान के, और टॉस जीता था चेयरमैन डीडीसी के कैप्टन ने, और बैटिंग को तरजीह दी है। अगर हम इस मुकाबले की बात करें, 18 बगैर किसी नुकसान के। Let's see who is going to start the over number 2. But eventually Adil Hussain was targeted in his very first over. Courtesy Naveed, 18 of 6. 3 boundaries and a very big 6 as well. And it's going to be change. Let's see who is going to start the very second over of the innings. And Furqan on the crease getting ready to face. Slips in place, short third man, a backward point, a straight point to cover and a mid-off. In he goes, good ball, just reaching forward and playing it all along the track for no runs. Imtiaz has been given the ball, and both the teams will be trying to finish the game with a victory, knowing that they have gone with the 2 losses respectively. And Chairman DDC Srinagar intentions looking quite great and big. Next ball, pulls the ball. Is it gonna go all the way? Yes, it does. After 2 bounces, the ball just reaches to the backward square leg region, and Furqan also chips into the confidence. They have come up with some plans, and the plans are working for them. Just watch the ball. It was short. Off the mat, but he just pulls it, and pulls it for 4. 22 for none. The plans are working. Next ball, very watchful on the front foot, just making sure he just comes behind the line and pushes it down to the short point inside the circle for no runs.
and they are in the momentum. They're just implementing those kinds of attacking scenarios, knowing that they're already out of the tournament. And let's try to finish with something to cherish about. Next ball way outside the off stump. That's the first wide of the game. And here we start with the extra. It's 23 for none. And Saklan talking about both the teams. I believe the plan's working for the likes of Chairman DDC Srinagar. चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की अगर हम बात करें यहाँ से तो दबाव नहीं होगा उन पे, और अगर वही से बात करें सेक्रेटरी टाइटंस की, उनके पास भी दबाव नहीं होगा क्योंकि कवैया मारो की स्थिति है नहीं। यहाँ से आपको मुकाबला जीतना है और कोशिश दोनों टीमों की रहेगी मुकाबले को जीतना। Well, absolutely, both the teams would love to get a finish and they will love to get a victory and give something to the team to celebrate about. This is the match number 20 and we're live from Kani Memorial Stadium, Rajouri, Kadal, Srinagar. AN News channel bringing you the live coverage, live telecast on the television, on different platforms as well. We are on YouTube, it's AN News Kashmir. We are on channel number 1114. If you are just having the live telecast on the channel, on the platforms of like TATA Sky, and we're live on other platforms like at cable network as well. Four in this over, a very good over. Let's see how Naveed will last ball. The left-handed batsman, he is looking great and it is looking in fabulous touch. Last ball from Imtiaz. Down the leg stump, I believe the ball just hits the band and that has gone to the fence for 4 runs. That's a great flick shot. Pants, all you need to do, just give it a bit of a flick. And it was screens who are having the replay, just watch it. Oh, that was down the leg stump. And it just flicks it beautifully and finishes the over with the boundary. 2 done, it's 28 for none. You are stronger than you think. Well, AN News is available on JIO TV Set Top Box. That's channel number 1114. And channel number 2053 on Tata Sky and Tata Play. On other platform, that's Vodafone Idea, cable TV across J&K and other parts of the country. Another platform, that's DailyHunt, MXPlayer. And on YouTube, it's AN News Kashmir. And Facebook, that is AN News channel. Eris Asif, the captain, now comes to the attack. First ball, onto the onside and not for the runs. Eventually there is a bit of a fumble and it's very sloppy effort and they go through for a single. 29 for none. And today Chairman DDC Srinagar have started off the innings with a bang and they will love to continue and just love to finish at a very, very good score. Let's wait whether they post the highest score of the tournament. So far it's 257. And having the combination and right hand out there in the middle, especially Naveed, who is batting gem, 22 of 7. It's now getting left-handed batsman ready. Around the stumps he balls. Oh, what a shot that is! Straight as a die, and no chance for the mid-off to cut the ball off. And has gone like a bullet for 4 runs. Glenn, I believe the ideas are working and the plan is also working and execution is going great. कमाल की पारी खेल रहे हैं नवीद, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल का, और ये लाजवाब शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. Next ball straight to the covers. Oh, there is a misfield. The ball is running away down to the point, I believe. Oh, with
limits of the boundary. He just stopped it. As could have been not for the runs. Eventually the umpires will definitely check whether he touched the rope or not. And I believe there are going to be the 2 runs. 2 runs. It could have been no run at all. Just watch this. He was running behind with the help of his left boot. Exposed, pretty defensive. On the back foot, eventually they go through for a single. And we were telling you this is match number 20. Chairman DDC Srinagar Cricket Club and Secretariat Titans. And if we talk about the points on the table, they have gone with the losses in all the 2 matches they have played respectively. And today they will definitely love to get a victory and have something to celebrate about. 8 runs so far and run rate is just over 13 seconds. अगर हम इस रन रेट की बात करें, इसी हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम फील्डिंग की अभी बात करें, वो स्लॉप भी रही है और इंटेंशन जाहिर करते हुए और सम्मान दिया खेला। वहां पर मिड ऑन के क्षेत्र में कोई भी रन नहीं मिलेगा। 36 on the second part of the game, just keeping in mind the hot conditions, humid conditions, the sun is at its prime. It's very hot out there in the middle to handle. You believe the physical test is also on. This physical fitness will be surely tested by standing out there in the middle. बिल्कुल फिटनेस की अगर हम बात करें, इस बार कव कॉर्नर के जानिब और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए छोटी गेंद की थी और सही नसीबी बल्लेबाज ने बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर 40 बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के बाद। Runs off that last over, Captain Asif. Rather 12 runs, beg your pardon. And they are just going with the thrash. They are just going with the thrash. Smacking all the bowlers, smashing all the bowlers. And Imtiaz once again into the attack. Some changes being made in the field. It's a difficult job for the fielders to settle back, as we have got the left and right hand combination on. It's going to be Naveed. It's looking great. His strike rate is 290, 29 of 10. First ball. Hits beautifully. There is a protection at the long off. Eventually only a single is going to result. And all they need to do is give every ball a go, knowing that attack is surely going to be the best defense for them. And this is all what T20 cricket is all about. It will be a kind of a booster for the likes of Chairman DDC Srinagar, the way they have started off the things. It's 41 for none. No third man. There is a short third man, a gully, a backward point cover and long off. Next ball just guides it down to the gully region, not for the runs. And I was telling you, the physical fitness that is surely going to be tested today. बहुत ज़रूरी होती है फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें। और आप जो भी खिलाड़ी देख रहे हैं फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत लैग कर रहा है उसमें। Well, it's all on the account of the prime heat. Axpol, that is up in there. Is it going to clear the ropes? Yes, it has. And has gone the distance. That has gone the distance. My God, what a shot that is from the likes of Burkhan. Just pitching the ball over. All he goes bang on the ball. And that's a bang shot. लाजवाब शॉट था, थोड़ी सी आगे गेंद की थी और सही ने से दी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए डिस्पैच किया इस गेंद को। और अब धीरे धीरे फुरकान भी अपनी तेवर दिखा रहे हैं यहां से। Axpol pulls the ball, not carrying. Oh! Awkward bounce and over the head of that fielder. It goes to the fence for 4 runs.
It's 50 completed, 51 for none. What a start. That's a dream start for Chairman DDC Srinagar. 3.4 balls only. With a run rate approximately 14, their gross cost 50. That is a massive start. कोशिश रहनी चाहिए 80 या 90 के आसपास भी अगर रन्स बनाएंगे पावर प्ले में अच्छा रहेगा इस टीम के लिए और 200-250 तक पहुंच सकते हैं. Powerful toss, a low toss onto the pads. He just flicks it beautifully. That is down to the backward skillet region. 4 runs. On and over, this is turning out to be 6-4-4. 15 of the over so far. And the credit goes to the right-handed batsman Furkan. He's having a gem of a knock. He is having a gem. And if you go on with this kind of a confidence, I tell you, Chairman DDC Srinagar might be breaking all the records so far. The J&K Qualifiers League. They are just going over 14 runs. That is 55 for none. And Secretariat Titans is feeling themselves completely helpless. Next ball, one knee down. Just making sure the ball just runs down to the wideish mid-wicket region. It's a single. 16 after over 4 done. It's 55 for none. It's a single. 16 after over 4 done. It's 55 for none. For Chairman DDC Srinagar. Its Secretariat Titans bowling lineup so far. Adil Hussain but 1 over very expensive 18. Imtiaz also gone for around 27 runs in his 26 rather of 2, and that last over that was very expensive 16. And just look at the two batters, Furkan and Naveen. Furkan 25 of 13 and Naveen batting on 30 of 11. And we have got manager of Chairman DDC Srinagar also playing in the team, that is Mr. Tahin Wani. बिल्कुल और अगर हम इस खेल की बात करें तो काफ़ी सीखने को मिलता है और आज बहुत कुछ सीखेंगे अगर यहाँ से जीत पाएंगे या अगर हारेंगे भी काफ़ी सीखने को मिलेगा उनको. Well, lots to learn and lots to go through. It's Asif, the captain, once again finds himself on the track to bowl his second over. Let's have a look on the onside. We have got a deep backward square region. Now go to a deep mid-on, and on the onside the ball from wicket keeper, short third man, gully, backward point cover point, and a mid-off. Next ball stands tall and just drives it down to the covers for no runs. That is a very, very great start. Half century post on the board. It's 56 for none. And talking about the run rate, that's over 13. And we played the power play completely used in a very big way. पावर प्ले को अच्छे से इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं स्कोर की अगर हम बात करें 57 बगैर किसी नुकसान के. और इसे अगर हम बात करें इस ओवर की अभी तक एक गेंद डॉट और चौका हुआ यहाँ पे गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. तो 60 बगैर किसी नुकसान के. अभी 5वां ओवर ये चल रहा है इस पारी की अगर हम बात करें. चेयरमैन डीडीसी से श्रीनगर ने टॉस जीता और बल्लेबाजी को तरजीह दी यहाँ पे और अच्छा स्कोर पोस्ट किया है अभी. Well, we definitely try to say it's a very good toss to win. You know, he just mentioned we would love to keep the score around 170, 180. I believe it's a great execution of the toss. You know, just winning the toss straight away, going to bat first. Captain Samir Wani of Chairman DDC Srinagar, and the results in front of all offs. ओहो क्या शॉट है, लाजवाब शॉट. कव कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए डिस्पैच किया इस गेंद को. My goodness, that is a wonderful slog from Furkan. Just watched the ball sailing. Oh, distracted from the up stump and beautifully smashed it over mid wicket for a massive 6. What a shot that is. That is a mega 6 from Furkan. 66 for none, and they are loving it. They are surely loving it. Next ball, oh, with the help of his legs. He was not sure to use his hands to stop.
Eventually the ball just got deflected after hitting the legs. It's gone for a single. 67 for none. Believe it, the run rate at the moment is just over 14. करंट रन रेट भी काफी अच्छी है और अगर हम दोनों बल्लेबाजों की बात करें इनकी भी स्ट्राइक रेट काफी अच्छी है और अभी भी 2 गेंद आना बाकी है तो इनकी भी कोशिश रहनी चाहिए अगर 2 बड़े शॉट्स आए और जो करंट रेट 14 के आसपास रहेगी वो अच्छा रहेगा इसके लिए और अगर हम इस टीम की बात करें तो 250 तक इनका लक्ष्य होना चाहिए. Absolutely, it does remind me of great opening pair from Sri Lanka. Sana Jayasuriya and Ramesh Kolavidarana and the ball over the mid-wicket region. It goes for 4 runs. Once again a boundary, and this time the left-handed batsman comes in to chip on. This is massive. This is absolutely a demolition. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से. आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप. Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan by Srinagar. Call 9596777133. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं. कारीगरी 5 overs completed. It's 71 for none. And you can't get better start than this. एक ओवर अभी भी बाकी है, आप रिप्लाई में देख सकते हैं. ये देखिए, That was a very good chip shot. 15 off that last over. And I believe it's the role of the spinners straight away to just bring the spinners and see some changes and some results for Secretary Titans. कल भी स्पिनर्स ने अच्छा काम किया था तो आज भी कोशिश होनी चाहिए स्पिनर को पावर प्ले में 1 ओवर करवाया यहाँ से. उनकी कोशिश होनी चाहिए 1-2 अगर विकेट्स यहाँ से लेने में कामयाब होंगे तो अच्छा रहेगा. Well, here is the most experienced spinner, Mr. Tahir, who plays for Secretary Titans. Now he gets the ball to start the last over of the power play. Wicket keeper close to the stumps. We have a short square leg, a fine leg as well at the edge of the circle. A ball and he's welcomed on the party. Oh, that has gone all the way. Oh, what a great shot. That was great timing and great placement as well. Not so much power behind the stroke, but it was all based on the timing. That's a great timing from the man. लाजवाब टाइमिंग. आप आए बाहर आए, फुरकान रुकने वालों में से नहीं है. शुरुआत आप देखिए छक्के के साथ हुई है. I feel absolutely amazed to have that kind of timing on the shot. That was a shot of the match so far. He's on 42. Expol on the onside. Oh, sloppy effort. And has gone over the fence for 4 runs. 2 fielders were running for the same and eventually not stopping it. And Furkan just Cassidy goes on to 46, just requiring 4 more runs to get past his half century. पहले छक्का फिर चौका. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसी गेंदबाजी हो रही है. Well, the strike rate for Furkan is just over 242. He's on 46 of 19. Will he get to the half century? Next ball, give it a tap, and it's gonna go all the way. That's a 6. My goodness, what's going on? Is it live match or cricket highlights going on at the moment? It's gone past his half century. He's batting on 52 of 20. My goodness, that is a real carnage from the chairman DDC Srinagar Cricket Club. They are having everything and they're just giving a go on every ball. फुरकान क्या खा के आए हैं और निसफ सेंचुरी भी मुकम्मल की है. इंटेंशंस क्लियर है यहाँ पे. फुरकान वो तेवर दिखाते हुए छोटी गेंद इस बार मिड ऑफ के ऊपर से और 1 बाउंस टू बॉल. चौका. 6-4 6-4 और पूरी तरीके से तहस नहस करके रखा है. अगर हम फुरकान की बात करें, ये देखिए छोटी गेंद इनके सामने से इसे दे रहे हैं. Well, Saklan, I believe we can only sum it up. It's a mess, completely mess with the bowlers. They're just hammering and towing. They're just, we believe just demolishing the bowling line. Let's watch this. Oh, very quick ball this time. Too close to cut. 20 of the 5 bowls so far. That's the last ball of the power play. It's 91 for none. There it goes.
Next ball again, very quick, almost kissing the off stump, but it's a dot ball to finish off. Power play done, it's 91 for none. ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले, तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं तस्वीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही जलवे दिखा, कश्मीर के शाही जलवे दिखा। शुरुआत काफी कमाल हुई है और इसी मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश होनी चाहिए बल्लेबाजों की। अगर हम चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की बात करें, आज मस्ट विन गेम नहीं है उनके लिए, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि फिनिश ऐसे करे इस टूर्नामेंट को। ओ बाल बाल बचे वहां पे, थोड़ी सी डिविएशन हासिल होती हुई, लेकिन अब राहत की अगर हम राहत की बात करें, अब महसूस करेंगे गेंदबाज को 5 खिलाड़ी को आप 30 गज के सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। एक और गेंद और बैकफुट पे आके बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से क्या रोक पाएंगे वहां पे। और अच्छी फील्डिंग वहां पे, शूज का शानदार इस्तेमाल करते हुए और दौड़ के 2 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। अब कोशिश रहनी चाहिए, आपने जो भी करंट रन रेट सेट करके रखी हुई इसको भी इसको आगे बढ़ाया जाए, 14 के आसपास ही रखा जाए, वो अच्छा रहेगा इस टीम के लिए। अगर हम बात करें चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर के, और थोड़ी सी पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका और कोई भी रन नहीं मिला। चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीते है, कोशिश उनकी रहेगी कि इस मुकाबले को जीता जाए। छोटी गेंद खेला का कॉर्नर के जानिब, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, बोनी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कमाल का शॉट, बड़ी गैप थी वहां पे और उसी का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। And if we talk about the chairman DDC Srinagar Cricket Club, this team is owned by Chairman DDC Srinagar, Mr. Malik Aftab. Malik Aftab is doing a very great job of promoting the sports out here. And he has been himself a very great sports person as well. Next ball, driven family. And has gone to the fence for 4 in a hurry. And it's 98 for no loss, I believe, after the completion of 7. Rather, the score which is cross-hand run, it's 102 for no loss. And I was telling you about the owner of Chairman DDC Srinagar, that's Mr. Chairman DDC Srinagar, Mr. Malik Aftab Saab, owner of this very team, is promoting the sports beautifully, doing a very splendid job, is launching and assembling this kind of a team and giving a kind of a bonus boost and a platform to all the young guns of his area out here. And today they are doing a great job. 7 overs done with the run rate of around 15. It's 102 for no loss and another century partnership for the first wicket. 100 अगर हम यहाँ से बात करें, 100 की पार्टनरशिप लगी है पहले विकेट की, और क्या ब्रेक करेंगे कल के रिकॉर्ड को? Well, that's a question to be answered. We have to wait for the same.
And so far, the very highest partnership in this tournament has been 163 between Boimir and Sohail Paul. But talking about the first wicket partnership, this is among the highest one. Is full toss. Is it gone all the way? Oh, yes! Almost hitting the wall of that house. That has gone a downtown sixer, and that has gone to Rajouri Kadal Srinagar. That is a massive one, and that is a towering six from the man left-handed. Wow! ये शॉट कमाल का था और डिस्टेंस था कि शॉट ने और स्क्वायर लेग के ऊपर से ये छक्का इस बल्लेबाज की तारीफें करनी चाहिए और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगा रहे हैं। और अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो फखर जमान की याद ताजा कर दी। Indeed, refreshing the memories. Oh, chips in straight, and that has gone straight as well. Down to the fence after a couple of bounces, 4 runs. He's having a song today, and he's having the time to celebrate, and he's having the knock to remember for ages and ages to come. Mr. Left-handed batsman, I believe. He is Naveed. Wow, 6 bowled by one. Oh, Paytm is gone, I believe. It was a very, very low pull toss. He was a bit late to the ball. Eventually, the ball just hitting the off stump. And there we see the first ball drawn. And Naveed departs. He departs for 45. Very unlucky not getting through his half century. But what a start. That is a massive start. स्टार्ट काफी अच्छा मिला है। अब जो नए बल्लेबाज आएंगे उन पे उतना दबाव होगा नहीं, उनकी भी कोशिश रहनी चाहिए इसी नक्शो कदम से आगे बढ़े और 250 तक पहुंचाया जाए यहाँ से अपने स्कोर को और अपनी निजी स्कोर को भी बढ़ाया जाए। और वैसे अगर हम यहाँ से बात करें चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की, उनकी भी कोशिश होनी चाहिए कि 270 240 के आसपास पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। There you see the dugout, very, very pleased dugout of Chairman DDC Srinagar. And they're loving the scenes. What a start, what a start. And Naveed departs. He departs for 45 of 17. And out walks to the centre, Mr. Yasir. And Malik Aftaf, owner of Chairman DDC Srinagar, will be a very, very happy man. वो खुश होंगे, लेकिन आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 मैच में दबाव क्या था और आज क्या दबाव है। आप उस दबाव से कैसे उभर के आते हैं, वो एक टीम को शानदार बनाता है। वो दबाव पहले 2 मैच में था, वो हमें दिखा अगर हम चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की बात करें, लेकिन आज वो दबाव नजर नहीं आ रहा है। Absolutely. They are just having a free experience over there, just making themselves completely out of those nerves as well. And playing with such a great confidence is always going to give you the boost. Some changes. Left-handed batsman goes off and right-handed batsman comes in. Shaukat. Make sure he just cuts it to the wide of that gully fielder at the ball to the fence for 4 runs. And Yasir gets off the mark. And he gets off the mark in a style on the very first ball. That's what confidence can bring to you. Knowing that platform is set for you, all you need to do just play one aggression and natural style. यासिर पे कोई दबाव है नहीं और खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग बदलता है। यासिर ने बोला मैं भी बड़े शॉट्स मार सकता हूं और दीजिए पहली शुरुआत चौके के साथ। 14 off the over. Even though a wicket as well, in goes Shaukat. Oh, slow. And the ball is running away. No, just within the limits of the boundary. I believe the umpires would definitely love to check the way. But they are going for just 2 runs over there. Only 2 runs. Last ball of the over, number 8. 16 of the over and a wicket is in. Just stump is for the LPW. And I'm looking not interested at all. 8 done. 118 for 1.
अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। CLC कोचिंग सेंटर, एयरपोर्ट रोड, परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, JEE और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। And it goes! Oh! Just short of the boundary. And one bounce over the ropes for 4. शुरुआत चौके के साथ वो इंटेंशन जाहिर करते हुए और रुकने का नाम नहीं ले रहे बल्लेबाज। Well. Furkan is having a song. He is having a time to celebrate. Next one again. That is up in there. Asif coming underneath. Oh! Takes it on the last fumble. Almost he just dropped it. And on to the play. Attempt to number 5. He just cuts over the catch. And finally we see the wicket number 2 going back to the pavilion. It's Furkan, 70 of 29. And what a knock. That is a knock off the game. And it definitely would love to just cherish him around all this. Furkan just going demolishing it. It was going hammering and tongs all the way. It was a mess. So just watch it in the replay. He was aiming, hit it on the mid wicket. The ball just hitting the top edge. Asif, the captain, onto the catch. 1, 2, 3, 4. And out of the 5 attempt, he gets to the catch. And here we see Harun having a lost laugh. Watch it once again. He was aiming it, hit onto the mid-wicket region. Top edge. And there it goes to the covers. And there we have the great scenes in the center of the ground as well. और हारून की बात अगर करें हम, फ्लाइट से बीट कराने की कोशिश थी वहां पे और सफलता भी मिली उनको। और अगर हम कैच की बात करें, निगाह थी गेंद पे, इसलिए कैच को पकड़ा है। Yes, you got it right. He was focused for the catch. He was having a full balance. He had got himself positioned for the same. He just fumbled once, twice, thrice. And on the attempt to number 5, it just gets over. Ball just drives it on the upside down to the point, and we find new batsman on the screens and he gets off the mark straight away. यासिर की भी कोशिश होनी चाहिए कि उसी मोमेंटम को आगे कैरी किया जाए। ये देखिए उठाया है, क्या वैल्यूएशन मिला, पीछे प्रोडक्शन मौजूद है, थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो और डायमेंशंस काफी बड़े हैं वहां से, और दौड़ के दौरा मुकम्मल किया। वहां से बड़े शॉट लगाना आसान काम नहीं होगा अगर हम मिड विकेट के इलाके की बात करें। Well, not gonna be easy to hit that mid wicket region. You know that boundary will around be 80-85 meters, and this is also a big ground on every part of the ground. On if you look around, you will find it 70-75. Some changes being made. Long leg brought onto the fine leg. We have a deep mid wicket. We have a deep wideish long on. Here goes Harun. X-Pole just waits for the crease and eventually Sonu just gives it a wide. Extra. No extra so far, I believe. Not many extras in this very innings. But there has been the showering of boundaries and sixes from chairman DDC Srinagar. एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन फील्डिंग स्लॉपी रही है। कल के मैच की हम बात है, दोनों मैचेस की बात करें तो एक्स्ट्रा ज्यादा दिए थे वहां के गेंदबाजों, लेकिन अभी यहां से तो वो नजर नहीं आया, लेकिन फील्डिंग स्लॉपी रही है आज। Next ball, slugs it. Oh, beautiful catch! What a catch! And just watch the celebration from the bowler. Harun signaling the batsman Mirsha, just check you away and go back to the dugout. And we should applaud the catcher out there. Running catch, not easy always, but eventually just finishes with a great catch. ये कैच पकड़ना आसान काम होता नहीं है, जो रनिंग कैच होता है, और वहां से अच्छा कैच पकड़ा और एक और विकेट का पतन होता हुआ। अगर हम बात करें चेयरमैन DDC श्रीनगर 127, 2 विकेट के नुकसान पे एक गेंद का
अभी भी आना बाकी है। और 3 क्या वो भी चेक किया जाएगा? जी हाँ, विकेट वहां पे, तो 3 विकेट्स। मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परिपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत। यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है। मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करें 9906 981888 9906 982888। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी Welcome back. Last ball of the over number 9, and new batsman who makes out to the middle. That is the captain, Mr. Samir Vani, and straight away gets off the mark for the boundary. That is a lovely shot. Just watch and replay. Rather, it was the last wicket that got a beautiful catch taken. Samir Vani, the captain, who did mention on the toss, we would love to pose a score of 170-180. And it should not be any problems for the team. Just crossed that 170-180, just 9 overs done. Having 130 on the board, I believe 200 should be scored. इंटेंट सेम होना चाहिए, और अगर ज्यादा विकेट्स गए तो फिर वो काम नहीं हो सकता है। विकेट्स आपको हाथ में रखने, फिर आप ज्यादा काउंटर अटैक कर सकते हैं 5 ओवर्स में जो आखिरी होंगे। खिला मिड ऑफ की जानिब कोई भी रन नहीं मिला वहां पे। अगर हम मीर और समीर जो दोनों बल्लेबाज है अभी क्रीज पे, कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे अपनी टीम के लिए। और बैकफुट पे आके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए, ये शॉट कमाल का था। बैकफुट पे ये शॉट खेलना आसान नहीं होता है। Well, never easy to play on the back foot. Just watch this beautifully. Just slashing it. He has just slapped it and slapped it for 4. Mir Shahid now chips into the confidence, hitting the first boundary. And just see the score, just cruising to 134 for 3. Next ball from Shaukat. Chip is in air. Is it gonna be caught? Fielder coming running in front. Oh, beautiful catch! And this is wicket number 4. Mir Shahid departs. He departs for 5 of 3. I believe now it's gonna be the collapse. Believe it, more than 100 runs for the opening wicket, and now 4 down with 134 on the board. चेयरमैन DDC श्रीनगर की जो बल्लेबाजी गलती कर रहे, टॉपे में अपनी विकेट दे रहे, ऐसा आपको करना है नहीं, और दबाव आप पे है नहीं। आपको आपकी कोशिश होनी चाहिए यहाँ से जो आप रन से बटोर रहे हैं, जो खराब गेंद मिलेगी आप उसको अच्छी से दे सकते हैं, और जो अच्छी गेंद उसका आपको मार रखना है। डिफेंस शॉट्स की अगर हम बात करें, या आपको सिंगल्स को डबल्स में रोटेट करना है, वो आपको करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते जो आप अभी कर रहे हैं। ऐसे आप अपनी टीम को खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ से एक और विकेट का पतन जो 250 के आसपास स्कोर नजर आता, मुझे लगता है उसमें इजाफा तो नहीं होने वाला। अब वो स्कोर 200 या 180 के आसपास मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से गलती ना कीजिए, गलती आप कर रहे हैं। अगर हम चेयरमैन वाकई लज्जत है। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत के सही नहीं है। स्ट्रेटजीज को आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप एक मोमेंटम सा, एक पहाड़ जैसा लक्ष्य आप स्कोरबोर्ड पे दर्ज कर सकते हैं। अंपायर
कि अगर हम बात करें फजा में हाथ बुलंद किए अतिरिक्त के रूप में 1 रन मिलेगा। फॉरवर्ड डिफेंस, गेंदबाज गेंद को फील करते हुए और कोई भी रन नहीं स्कोर बोर्ड पे। हम यहाँ से स्कोर बोर्ड की बात करें, कोशिश है क्या, कोशिश में कामयाब होंगे अगर मैं चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर की बात करें। कलाइम का इस्तेमाल शॉर्ट स्क्वायर के जानिब गेंद को खेला है और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। $135 for 4. At one stage they were cruising and now they are just collapsing and losing the grip. That's the end of over. Half stage done, 10 done. Chairman DDC Srinagar winning toss, batting first. It's 136 for 4. Experienced bowler now brought back into the attack. He was taken for runs. He was taken for around 20 in his very first over. Mr. Tahir, first ball, just plays it back along the track for no runs. And some smiles back on the faces of Secretary Titan Saklan. कमबैक अच्छा रहा है उनका, हिम्मत नहीं हारी है और ऐसे ही आप इस गेम में वापस आ सकते हैं। विकेट्स आपको लेने हैं और वही कर रहे हैं अभी अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें। Absolutely. Only way to get back stronger, way back in the game is to get wickets. And Secretary Titans have found themselves a way of just nipping with those wickets. And they've got 4 of them. Axball just plays it in the gap, guides it beautifully. The ball is running away down to the fence, rather the outfield is pretty low. And 2 runs simply. 2 runs. Mudassir just moves on to 6 with that double. And score with that double goes to 138 for 4. S1 is up in there. Is it gonna be caught? Fielder trying to come underneath. And he makes the mistake. Number 5 goes. Can you believe it? This was not going to go all the way. There is a big dimensional boundary on that mid-wicket area. Not easy to do the distance on that side of the ground. And finally we just go for another great catching. Half the team now departs. It's 138 for 5 and Tahir comes up with a wicket. खराब क्रिकेट हो रही है अगर हम चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर और ये कोशिश कर रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन डायमेंशंस की अगर हम बात करें वो काफी बड़े हैं। मिड विकेट की अगर हम बात करें और बड़े डायमेंशंस है इस ग्राउंड के, तो आपको तोहफे में विकेट ना दे तो बेहतर रहेगा आपकी टीम के लिए। तोहफे में विकेट दे रहे हैं अभी। Indeed, I do agree with you. At one stage they were cruising towards the biggest score of the tournament. Now it looks completely an apple toss for them, just crossed 200 as well, because their 5 top order batsmen have gone. half the team now goes back to the pavilion and out walks to the middle. Let's get the name. Mr. Hilal. First ball straight to the point, not for the runs. And now it seems quite difficult for them to just reach 200 as well, Saklan. बहुत मुश्किल लग रहा है अब चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर के लिए। पार्टनरशिप की जरूरत है, अशद जरूरत है पार्टनरशिप की। वो लगे कि अगर हम चेयरमैन डीडीसी श्रीनगर टॉस जीता था उन्होंने और बैटिंग को तरजीह दी थी, पहले लग रहा था 250 तक पहुंचेगी, लेकिन अब नामुमकिन सा लग रहा है। Absolutely, it does look impossible from here onwards. Last ball, dot. It's 11 done. DDC winning toss, batting first, find 138 for 5.
फैशन फिएस्टा, वादी में कायम मुनफरद फैशन स्टोर, जहां पर 70% तक आला और मयारी मसनूआत पर छूट दी जाती है। यहाँ पर किड्स वेयर के साथ साथ आपके स्टाइल और अंदाज को चार चांद लगाने वाले गारमेंट्स, विंटर और समर वेयर, ब्रांडेड शूज और मुख्तलिफ आला किस्म के ब्रांड से वाबस्ता। Fumble, chance for an out. No, very good piece of running between the stumps. And Samir Vani, the captain, just applauds his partner for that great running between the stumps. Score now moves to 140 for 5. Slower ball, trying to guide it, not getting the gap, not getting the placement right. And it turns out to be a dot ball. Harun now bowls in, just turns it away down to the mid-wicket region. Three fielders giving a chase. Finally, they settle for a single. 141 for 5. Samir Vani, the captain, plays on half a dozen. And with him, his partner Hilal. He's batting or not. Next ball. On to the long on. Oh, mix up. That finds his way back into the crease in the very, very nick of the time. Samir Vani, the captain, now waits for this. This one beautifully drives the ball and equally fielded well at the long off. And there has to be some kind of a platform in the form of the partnership now, knowing that half the team has gone back to the pavilion and it's a need for the construction of Saklan. And in that partnership, captain has to play a role. पार्टनरशिप की जरूरत है और कैप्टनी पारी आज खेलनी पड़ेगी। और अगर हम यहाँ से गेंदबाज की बात करें, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की, फ्लाइट से बीट कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि बड़े डायमेंशन के लिए बल्लेबाज जाए और मिड विकेट का इलाका हो, वहाँ से जा रहे हैं भी और दो इन्होंने महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किए हैं। Absolutely, very strong comeback from Harun, I believe. It has been a great comeback from the likes of Secretariat Titans. Enough their experienced bowler Tahir once again into the attack. Secretariat Titans will be very happy with the way now things are going for them. कोशिश की उन्होंने और हिम्मत नहीं हारी और उसी का फायदा इनको हुआ और अब वो पीना पर नजर आएगा। यहाँ से अगर हम गेंदबाजी की बात करें, सेक्रेटरी टाइटंस की कोशिश थी इनकी और उस कोशिश में कामयाब हुए जो इन्होंने कोशिश की थी कि विकेट एक आए, उसके बाद वो रास्ता हमवार हो जाएगा और वही हुआ है। This ball, his intention was to hit the ball, just changed his plan in place on the onside, and now a great thing, a rotation of strike going on. यही करना पड़ेगा, अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे तो सिंगल्स को डबल्स में रोटेट करना पड़ेगा और स्कोरबोर्ड को आपको चलाना पड़ेगा। अच्छी गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब गेंद गई है, 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। अब इक्का दुक्का से काम चला रहे हैं अभी बल्लेबाज और यही करना चाहिए। और जो पहले करंट रेट की अगर हम बात करें जो 16 के आसपास था वो 12 के नजदीक पहुंचती हुई नजर आ रही है। Let's talk about one important thing. If we talk about the batters of the Kashmir Valley, especially if we talk about the shorter 20 format of the game, you know, most of the batsmen out here, you will find they just believe in going, hammering and tongs, just coming down to the track, you know, just hitting the balls for sixes and boundaries. This rotation of strike, you know, just playing in ones and twos, it's something and it's being lacked at the highest out here in Kashmir. You believe that's the thing that they have to work on, just, you know, just bring their minds properly, just try to work on the rotation, just understand the situation of the game and just play according to the situations. I believe some sort of learning from the batters out here in the valley. सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना चाहिए और सिंगल्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप छक्के चौके नहीं मार सकते। अगर आप छक्के चौके मारेंगे तो क्राउड एंटरटेन होगा उससे, लेकिन अगर वहाँ से आपकी विकेट जाएगी आपकी टीम परेशानी में आ सकती है। आपको चाहिए
सिंगल्स भी अच्छे आपकी होनी चाहिए। अगर हम सिंगल्स की बात करें, रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी अच्छी होनी चाहिए, छक्के भी आपके पास वो काबिलियत होनी चाहिए छक्के मारने की। लेकिन जो आजकल के बल्लेबाज हैं वो कोशिश ज़्यादा करते हैं कि छक्के चौके मारे और जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि पेशेंस उनमें कम है। And just remind me of great cricketer, Ranji cricketer of Kashmir, Mr. Wasim Raza. As I was talking to him on the post-match presentation when he got declared for man of the match, he did mention the same thing. They just was trying to play according to the situations of the game. Next ball, gone. It's gone. 6th wicket gone now. And Harun gets another wicket to his name. I believe wicket number 3. And chairman DDC Srinagar losing the way. और जो फील्डर है कम से कम आज 4 कैच पकड़े हैं उन्होंने, 3 या 4 कैच पकड़े हैं और वो भी आसान कैच थे नहीं। मुझे लगता है इनकी तारीफें करनी चाहिए। Absolutely, catching has been great. Around 4 catches have been taken so far. And I was talking about that man of the match presentation where Wasim Raza did mention that we have to play according to the demand of the situation. What the situation demands you, a batsman should try to fit himself as per the situation is. And I believe no other batsman in the Kashmir Valley fits the situation as per as the demand gets as Wasim Raza is. He is such a wonderful reader of the game. He reads the game and plays accordingly. वैसे ही आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आपको बैटिंग विकेट नहीं मिलेगी। कभी कभार अगर हम बात करें तो आपको एडजस्टमेंट करने में टाइम लेना पड़ता है आपको, और वो एक खिलाड़ी को अच्छा बनाता है। आप कैसे टाइम लेते हैं, आप अपने इनिंग्स को कैसे बिल्ड करते हैं और फिर फिनिशिंग टचेस आप कैसे देते हैं, वो एक खिलाड़ी को अच्छा बनाता है। Out walks to the middle, manager of chairman DDC Srinagar, Tahin Farokhwani. And he is a left-handed batsman now, gets ready to face Harun. And he has got the job to be done. He looks quite confident. Oh, good ball. He was trying to cut it late, but eventually happens to play the ball to the cover for no runs. He is the manager of this team as well, and he plays for the team as well. Next ball. A type of batting practice for Tahin Farokhwani over there. He knows that we have already gone 6 wickets back to the hut now. It's a kind of a reassembling situation for them. आप ये इस शॉट से देख सकते हैं पेशेंस की कमी नजर आ रही है। बड़े शॉट के लिए गए थे, आपको पता है यहाँ से आपकी टीम अभी मुश्किलात में है, परेशानियों में है, आपको सहारा देना चाहिए। बड़े शॉट के लिए गए थे, अगर विकेट जाती और फाइन खेला है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अगर बात करें बल्लेबाज की तो वो पेशेंस हमें आज, अगर हम पेशेंस की बात करें, मुझे लगता है वो पेशेंस आज नजर नहीं आ रही है। Indeed, we do. And we did not find that kind of patience, that kind of rhythm. If we talk about the batters of chairman DDC Srinagar, just going through half centuries, not trying to convert them into the big hindrance. As did mention by Asif Ramzan and Wasim Raza plus Rais Nazir yesterday as well. Eventually, to finish the over with a dot, 14 done, it's 153 for 6. Come on, you can do this. Come on. I say come on.
CLC कोचिंग सेंटर एयरपोर्ट रोड परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परेपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत। यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है। मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करें 9906981888, 9906982888। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Barcha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, AC, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Barcha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001.
कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. CLC कोचिंग सेंटर, एयरपोर्ट रोड, परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा, राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परेपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत। यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है। मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करें 9906 981888, 9906 982888। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़ज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को चार चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है। Royal Concept. Concepts makes you royal. Royal Concept, Parcha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133.
रॉयल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मेक्स यू रॉयल रॉयल कॉन्सेप्ट बच्चा चौक लाल चौक श्रीनगर J&K 190001। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. CLC कोचिंग सेंटर एयरपोर्ट रोड परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साथ साथ नीट JEE और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परेपुरा में पा सकते हैं There is a protection at the deep third man. Can't get the ball through a single cruising. It's 168, I believe, for the loss of 7. And Tahin Farookwani, manager of the team, chairman DDC Srinagar Cricket Club, left-handed batsman, has finding the gap. That's going to the deep mid-on, coming back for the second. Oh, in the nick of the time. Just make sure it just gets into the game and gets into the house as well. 169 for the loss of 7. Still wait a while as the score will be displayed on the screen as well. Next ball outside the off stump. And that's end of over. 17 done. 169 for 7. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप Kashmir Valley Motor Private Limited, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. Last over of the very first innings. 2 hours deducted for reporting late to the ground. It's going to be Asif into ball to Tahin Farookwani, who's batting on 10 of 14. A very small cameo at the very critical juncture of the game. They were losing the grip, they were collapsing, and finally some resembling situations. Here is Asif. Right arm round the stumps. This time short of land, and they're appealing for the cut behind. Up goes the finger. No chances and no problems whatsoever for the umpire. Chavez after raise his finger up. And Tahin Farookwani departs for 10 of 15. A very, very slow innings, but eventually some good runs under the belt and some good runs for the team, chairman DDC Srinagar. It's 8 down. And we are with us, executive editor, Mr. Mudassir Yaqub Saab, ANN News. Would love to share the box with him and just let's share some experience with him. Mudassir Saab, welcome to the box. थैंक यू बाबा साहब। आज हमने देखा कि डीडीसी चेयरमैन ने अपने पारी की शुरुआत जो है 2 इधर बैटिंग से की, पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन इन्हें सबसे पहला झटका उस वक्त लगा जब इनका अहम बैट्समैन नवीद जो है उसको सेक्रेटरी टाइटन ने चलता कर दिया। उसके फ़ौरन बाद फुरकान शबीर उसको भी चलता कर दिया। हालांकि दोनों ने ओपनिंग बहुत अच्छी की और तकरीबन 100 के करीब जो है पावर प्ले में ही उन्होंने रन जो है स्कोर कर लिए थे।
उसके बाद हमने देखा कि कुछ शानदार कैचेस जो हैं सेक्रेटरी टाइटन ने हासिल कर लिए, जिसकी वजह से इनके मजीद बैट्समैन आउट हो गए और इब्तिदाई मरहले में ऐसा लग रहा था कि 200 से मजीद इनका स्कोर जो है वो हो सकता है, लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी टाइटन से बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए और बेहतरीन कैचेस लेते हुए ये दिखा दिया कि उन्होंने मैच में वापसी कर ली है। अब तक का जो स्कोर है 169 फॉर 8। अभी मजीद ये देखना है कि 200 का स्कोर टच हो पाता है या नहीं जी। Well, if we talk about Chairman DDC, you just mentioned they just got off a very, very big start, around 107 runs. They just started with their opening partnership, but you believe this is very disappointing on the point of Chairman DDC, not capitalizing on the start, not going for some big runs on the belt, and we find themselves struggling a big way at the moment. Well, DDC chairman has already lost 2 matches in this tournament and his third one. I think their strategy was to, they were not under pressure to win this game, so they were playing their natural game today. And their batsmen were with the strategy to score maximum runs for the team. I think somewhere they committed a mistake, and also Secretary Titans made a very good strategy, and by their excellent catches and fielding, they restrained them somewhere. And let's talk about the beauty of the shorter format of T20 game, It doesn't take much of the time to just see the change in complexions of the game. From the first point of the view, Chairman DDC going very great. They were just going, all the guns were blazing. But as we just approach to the over number 8 and 10, the momentum started to go in favor of Secretary Titans. So here we see that this T20 game of cricket is always added to speak, and it just shows us some sudden collapses as well. Yeah, of course, you're absolutely right, and we have seen MLA Gymkhana and some other teams, FCC Chanipura, they did excellent in the power play, and up to 10 hours of the innings, they did excellent. But subsequently, we see the opponent teams had also very good strategy to restrain the opponent team. और यहाँ पे बाबा साहब मैं एक अहम बात अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा जो हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अब एन न्यूज़ जो है अगला टूर्नामेंट जो है उसका इनेकाद होने वाला है। उसके तमाम तर मैचेस जो हैं वो लाइव टेलीकास्ट होंगे एन न्यूज़ पे, और उसमें जो है हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो है फर्दर इम्प्रूव की हुई है। उसमें DRS सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। उसमें एक रिव्यू के बजाय हम 2 रिव्यू देंगे टीम को, और मज़ीद उसमें बेहतरी होगी। तो इस हवाले से ये खुशखबरी जो है आज हम यहाँ पे बैठ के अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं कि अब अगला टूर्नामेंट जो है उसकी बुकिंग जो है कल से इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। That's a good news and a great announcement for the cricket lovers. And what's going on over there? That's pretty drama. That's drama on the ground. It was a catch. The catch was dropped. It could have been chances of run out here, there. Eventually they go just go for the singles and runs. And this is some, with every passing day, we believe there is betterment in every sort of the momentum. If we talk about the game, quality going great, decision is going great. Now you come up with a great decision. Now the second edition is about to take place. Tomorrow will be the, official announcement of the same. Now there will be proper registration for the same, and there will be different venue at all. So overall, we believe in a news channel is having accomplishing scenes, successful scenes, and I must tell you, this is going to be successful scenes for the young cricketers of the valley as well. Inshallah, these have been our efforts to do something better for the society and for our youth especially. And as being a journalist, I have been in a ground, and I used to hear a lot of grievances and demands of the youth. One of their demands was that they want to play a professional cricket of the standard. And these are the efforts of NN News that we should bring the platform where they can feel proud to be playing the professional cricket. And as we are going to start next tournament, inshallah, for which booking would be started from tomorrow, I think that would be another opportunity for all those teams who have been complaining that they did not get chance in this tournament. And let me make it very clear that the registration is open, and it would be first come first serve. The team who registers first would be given chance, and as soon as we are taking 16 teams in that tournament, as soon as we get 16 teams, the registration would be closed. So here I would like to reiterate that there should be no complaints for the teams who are very serious in taking participation in that tournament. They must
book their registration on priority so that they don't have chance to complain again. And let's talk about the discipline factor. You know, in this very tournament, the umpires have come up with some strict discipline factors. Some players have been given some bans. Some teams have been disqualified. Some teams have, teams have been provided with the bans, not being allowed to take registration in the second edition. You believe this is, some kind of a platform for the cricketers to, to learn some basics and ethics of the game. Just report. Come on, you can do this. Come on, I say come on, you can do this. Come on, you can do this. Come on. कर छूना है आसमान को मजबूत, अपनी सोच रख बुनियाद जब पुख्ता बने, परवाज़ फिर अपनी दूर रख You are stronger than you think. मैक्स सीमेंट। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों